Hi students, text me. No audio is fine. Text me about audio. Fast. Okay. Can I start? Okay. Topic is chemical equilibrium. Listen carefully. And in this lecture, I will discuss questions based on chemical equilibrium. Look at the board. Look at the board. Question number first. For the reaction 2NO2 reversible 2NO plus O2, the value of Kp is equal to K. What will be value of Kp for the reaction? Listen carefully. One term given 2NO plus 2NO2 reversible 2NO plus O2. Kp is equal to K, and it is given what will be Kp of NO plus half O2 reversible NO2. Kp is equal to what? Look at both carefully. For first reaction, Kp is equal to what? Clear? First reaction, Kp is equal to K.
and for second reaction it is given what will be Kp with the help of equation number first. Listen, relation between equilibrium constant depends upon relation between reaction. In relation between both reactions, listen, in first reaction NO2, 2 is coefficient, NO2 is reactant. In second reaction NO2 product. In first reaction products are reactants in equation number second. That means second equation is reverse of first, but each component of first equation dividing by 2, because in first 2NO2, in second NO2, in first 2NO, in second NO, in first 1O2 and in second half O2, and hence Kp of second, listen, Kp of second, when reaction reverse, then equilibrium constant 1 by reciprocal of first, 1 by K, but each component dividing by 2, and when each component dividing by 2, it will be power 1 by 2, power 1 by 2, and it is equal to 1 by root under K. Clear? And hence answer will be third number 1 by root K. Tell me, is it clear? If yes, text me fast. Is it clear? Text me. Is it clear? Okay. Now question number second. But theoretical part of the question, always keep in mind, when a reaction is reverse of another, when reaction reverse, equilibrium constant reciprocal. When component multiplied by n, then equilibrium constant is equal to power n. In this question, there are both terms applied. Second is reverse of first, and component multiplied by 1 by 2, that means divide by 2, and hence Kp is equal to 1 by K to the power 1 by 2, and hence 1 by root K. Now, question number second. Look at the board. Question number second. Reaction N2 plus O2 2NO. N2 plus O2. Reversible 2NO. And second reaction is half N2 plus half O2 reversible NO. The equilibrium constant of this reaction are K1 and K2 respectively. The relation between K1 and K2. Listen, K1, K2 given. First equation N2 plus O2 reversible 2NO. Second half N2 reaction
In both reaction, reactants and products are same, but each component dividing by 2, and hence K2 is equal to K1 to the power half, K1 to the power half, and it is also is equal to root under K1. Clear? Clear? K2 is equal to K1 to the power half, and it is equal to root under K1. Now tell me fast. Question number second clear? If yes, then text me. Question number second clear? If yes, then text me. Question number second clear? You all text me. Question number second clear? Fast. You all text me. If question number 2 clear, then text me. Question number 2 clear. Fast. Now, question number third. Question number third. Listen. The equilibrium for the formation of HI from hydrogen and iodine can be represented by either of the following stoichiometric equation. Listen, formation of HI, number 1 is given H2 plus I2 reverse. फिर से किए हैं कि दोबारा? Text me. All things okay? Fast. Text me. All things okay? All things okay?
Listen. Question number 1 clear? Equation first and equation second. Second is reverse of first and each component dividing by 2 and hence for reverse 1 by k and dividing by 2, that means root k, and hence answer number third is correct. Answer number third is correct. Now, question number 2. Question number 2. N2 plus O2, 2NO, half N2, half O2, NO, and both equation related with only dividing by 2. That means reactants are same, products are same, only equation first dividing by 2 and hence equilibrium constant of K2, equilibrium constant of equation second K2, K2 is equal to K1 to the power half and it is equal to root under K. Now, equation number third, question number third. Listen, the equilibrium for the reaction for the formation of HI from hydrogen and iodine can be represented by either, listen, one number H2 plus I2 reversible 2HI given K1 and half H2 plus half I2 reversible HI equilibrium constant K2. Listen, the equilibrium constant K1 and K2 are related with, listen, K1 is equal to conc of HI power 2 dividing by conc of H2 and conc of I2, and K2 is equal to conc of HI dividing by conc of H2 to the power half into I2 to the power half. I2 to the power half. Look at both. First equation, second equation. K1 is equal to HI squared dividing by conc of H2 into conc of I2, and for second conc of HI dividing by H2 to the power half and I2 to the power half. Clear? Listen, what will be answer? K2 is equal to, in question K2 is equal to, listen, K2, it is K1. When K2 to the power 2, when K2 to the power 2, then it is equal to K1. And when K2 is equal to K1 to the power half, K1 to the power half, then it is equal to K1. That means K1 to the power. In equation first and second, both are related by first equation dividing by 2, and hence K2 is equal to K1 to the power half. K2 is equal to K1 to the power half. All three questions related with each other and based on only one concept. Next, clear? In equation, listen, in option number first, it will be 1 by 2, not power 2. K2 is equal to K1 to the power half. Next, it is 1 by half. 1 by half. Now, question number 4. Look at both.
which of the following is irreversible in nature? Question is irreversible in nature. Listen, condition for irreversible reaction. First, a strong acid base reactions are irreversible in nature. A strong acid and a strong base reactions are irreversible in nature. Number 2, when one of the product escape out as gas, then reactions are irreversible. Combustion reactions irreversible, and when one of the products separate out as solid, that means when in product precipitated salt form, and precipitated salt means AgCl, PbSO4, PbI3, PbBr2, PbCO3, that means lead carbonate, AlOH thrice, ferric hydroxide, that means FeOH thrice forms, then reactions irreversible in nature. Now, number first, 2NH3 N2 plus 3H2. Most popular, it is reversible in nature. Listen, 2NH3 N2 plus 3H2, it is reversible reaction. PCl5, PCl3 plus Cl2, it is reversible reaction. KClO3, KCl and O2, it is irreversible in nature. Irreversible reaction. Look at both. KClO3 convert into KCl plus 3/2 O2. It is irreversible. And fourth is SO3 convert into SO2 plus O2. It is reversible in nature, and hence equation number 3 is correct. Irreversible. Why equation 3 correct? Because decomposition of KClO3 is irreversible, because KClO3 decompose into KCl and O2, but KCl and O2 do not forms KClO3 in normal condition. KCl and O2 forms KClO3 in a special condition, that means in presence of catalyst, and hence it is irreversible in nature. Equation number 4 is irreversible. Next, question number 5. Look at board. For reaction PCl3 plus Cl2 is equal to PCl5, Kc for the reaction at 250 degrees C is 26. Listen, Kc is equal to 26. Temperature is equal to 250 degrees C. 250. And what will be Kp? Kp is equal to what? Question is Kc given, even equation is given, PCl3 gas plus Cl2 gas convert into PCl5 gas. Listen, most important question for your examination. आपके सीई एग्जामिनेशन में आप ये जान लो कि इस तरह का क्वेश्चन पूछने का बहुत अधिक प्रोबेबिलिटी है, और आप लोग अपने नोटबुक पे आज से एक अलग फॉर्मूला का आप एक चार्ट बनाइए
इंपॉर्टेंट टर्म्स, जिसमें मैं आपको फर्स्ट टर्म दे रहा हूं, आप राइट करो कि आपको पूछा जाएगा रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, एंड ऑलवेज कीप इन माइंड केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आरटी टू द पावर डेल्टा एन। क्लियर? लिसन, इस रिलेशन पे एक ऑब्जेक्टिव का प्रोबेबिलिटी है। मैंने आप लोगों से ये कमिटमेंट किया था कि मैं आपको 4500 क्वेश्चंस का एक सीरीज दूंगा, और इसी 4500 क्वेश्चन से आपको वो 50 क्वेश्चंस दिखेगा। क्लियर? उसमें मैं आपको आज फर्स्ट टर्म ऐड कर रहा हूं, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। अगेन रिपीटिंग, रिलेशन केपी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन रिएक्टेंट प्रोडक्ट यूज इन पार्शियल प्रेशर, and Kc, that means C for concentration, when conc of reactant product used during representation. R is gas constant, T is absolute temperature, that means temperature in Kelvin, delta N is summation of coefficient of gaseous product and minus summation of coefficient of gaseous reactant. क्लियर? ये जो क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और मैंने जब मैं आपके काठमांडू शहर में था तो मैं आप लोग को देखा था कि कैलकुलेटिंग आप लोग थोड़ा वीक हो। इस चीज को मैं परमानेंट खत्म कर दूं। आपका क्या कैलकुलेशन है उससे नहीं मतलब है, लेकिन केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन अगर कैलकुलेशन बेस होगा तो मैं उसके लिए आपको एक ऐसा टर्म बताऊंगा, कुछ कैलकुलेशन आपको अपने माइंड के मेमोरी में याद रखना पड़ेगा, और हर क्वेश्चन सॉल्व हो, हर क्वेश्चन सॉल्व हो। इसलिए मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन से आपको न्यूमेरिकल्स का जो एरिया होगा वहां पे आपको मैं स्ट्रॉन्ग करूंगा। लिसन, क्वेश्चन केसी गिवन 26, टेम्परेचर 250 डिग्री सी, केपी इज इक्वल टू व्हाट? Equation is PCl3 gas plus Cl2 reversible PCl5, and formula is Kp is equal to Kc into R2 to the power delta. Clear? Now इसको कैसे सॉल्व करें? तो आपको Kp दिया है, सॉरी आपसे Kp पूछा जा रहा है, Kc दिया हुआ है, R गैस कांस्टेंट होता है। लिसन, ये कांस्टेंट को अगर आप एटीएम लीटर में लोगे तो 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल एंड पर केल्विन। क्लियर? एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। लिसन, एंड टी इज टेम्परेचर। आप पहले फिर से मैं आपको इस फॉर्मूला पे मैं फोकस कर दूंगा, आपका हम 5 मिनट्स टाइम यहां लेते ताकि हर क्वेश्चन आपसे सॉल्व। केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आरटी टू दी पावर डेल्टा एन। आर इज गैस कांस्टेंट, टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर इन केल्विन। नाउ आपका जो क्वेश्चन दिया है आप उस पे आइए। क्वेश्चन में इक्वेशन दिया है PCl3 गैस प्लस Cl2 प्लस PCl5। आइए जानते हैं इसका डेल्टा एन क्या होगा? समेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, तो कोफिशिएंट 1 माइनस गैसियस रिएक्टेंट 1 प्लस 1, दैट मीन्स इट विल बी -1। डेल्टा एन ऑफ इक्वेशन इज -1, यस और नो? delta n -1, always keep in mind delta n -1 relation is Kp equal to Kc into R2 to the power delta n. Now what will be answer? Look at the board. Kp is equal to Kc and Kc is 26. Now R we know that 0.0821
into temperature. Temperature 250 degree C, and in degree C, when we add 273, it will be Kelvin. So 250 plus 273 is equal to 523 n to the power delta n, and delta n is -1. Clear? 26 into this. अब मैं आपको बता दूं, यहां पे आप सब क्या करते हो, कमी हो जाता है कि हाउ टू कैलकुलेट। मैं आपको यहां तो ये 523 है, 250 डिग्री से नॉर्मली नहीं आएगा। आप देखना आपका जो भी एग्जाम में पूछा है, टेम्परेचर 0 डिग्री सी देके पूछा होगा, 25 डिग्री सी और 27 डिग्री सी। बट मैं आपको बता दूं, इसका कैलकुलेशन ही आप याद रखें, और इसका कैलकुलेशन हो जाएगा। मैं आपको ये कैसे याद रखेंगे मुझे मालूम है, मैं आपको अभी बताऊंगा। Kp इज इक्वल टू 26 और इसका कैलकुलेशन होगा 0.0233। और अब आप लोग मल्टीप्लाइड करो और मुझे मैसेज करो टेक्स्ट में कि व्हाट विल बी आंसर। मुझे मालूम है, लेकिन आप कैसी RT टू दी पावर डेल्टा एन, आप सब मुझे मैसेज करके बताओ कि व्हाट विल बी आंसर। क्लियर? राइट एंड फास्ट। What will be answer? Text me fast. Yes. Text me fast. What will be answer? One student, Tactical Yuvraj Yadav. Your answer is correct. All student, reply me fast. Second student, Navina Shah. Correct. Third student, Ashish Joshi. Correct. Chito Chito Karnus. Chito Chito Garnus. Clear? Text me fast. क्लियर? लिसन, ये तो मैंने आपको यहां कर दिया, लेकिन आप कहोगे सर मुझे ये कैसे याद रहेगा। देखो नॉर्मली 250 डिग्री सी आपको आएगा नहीं एग्जाम में। आपको क्या आएगा और आपको क्या याद रखना है, मैं उस पर डिस्कस करता हूं। लुक एट बोर्ड, लिसन। आपका क्वेश्चन रहेगा Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT टू दी पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तब तो आसान है, आप स्क्वायर कर लोगे, क्यूब कर लोगे।
डेल्टा एन निगेटिव है तो थोड़ा आप कैलकुलेशन आपका लेंदी होगा, लेकिन मेरे पे आप ट्रस्ट करो। केमिस्ट्री का टेम्परेचर जब भी क्वेश्चन में आएगा तो नॉर्मली 3 टेम्परेचर आता है, 0 डिग्री, 25 डिग्री और 27। और मेरे पे टेस्ट करने से पहले जो बात अभी आप सुन रहे हैं, इस लाइव क्लास के बाद आप क्या करना, अपना क्वेश्चन बैंक देखना, और आपके हर क्वेश्चन में 3 से 4 टेम्परेचर ही दिखेगा, 0 डिग्री सी, 25 डिग्री सी, 27 डिग्री सी, मान लो फोर्थ कर दिया मैं 100 डिग्री सी। और डेल्टा एन का वैल्यू पॉजिटिव है तो ये आपका पार्ट है, निगेटिव है तो मैं करके देता, और बहुत टफ नहीं है, ये याद रखिएगा, बहुत ही आसान टर्म है। आपको 4 वैल्यू आपको याद रखना है। आप देखो, अगर ये टेम्परेचर 0 डिग्री सी लिया, T इक्वल टू 0 डिग्री सी, दैट मीन्स 273 केल्विन, क्लियर। एंड डेल्टा एन अगर -1 है तो 0.0821 0.0821 इंटू 273 टू द पावर -1 टू द पावर -1 इज इक्वल टू 0.032। आप ये डाटा को याद रखें। अगर 0 डिग्री है तब, अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सी है, 298 केल्विन है, देन इट विल बी 0.0821 इंटू 298 टू द पावर -1 एंड इट विल बी 0.040। और अगर टेम्परेचर 27 डिग्री सी, 300 केल्विन, 0.0821 इंटू 300 टू द पावर -1, it will be 0.040. Write down fast. Listen, temperature 0 degree C, 273 Kelvin, 0.0821 into 273 to the power -1, it will be 0.045. In case of 25, 27 degree, 0.040. And when temperature is 100 degree C, 373 Kelvin, 0.0821 into 300 to the power -1, 0.032। ये 4 टर्म, लेकिन याद रखना है when डेल्टा n -1, आपको 2 ही टर्म याद रखना। देखो, एक क्वेश्चन के लिए इतना करना पड़ेगा। एग्जाम में अगर आप ये याद, इतना डाटा अगर दिमाग पे रखते हैं, और मैं इसको प्रैक्टिस कराऊंगा, तो एग्जाम में अगर आपको डाटा याद है तो ये क्वेश्चन बनेगा, नहीं याद है तो ये एक क्वेश्चन बनाने में आप 3-4 मिनट्स लगा देंगे। यहीं पे कंपटीशन दूसरे स्टूडेंट से आप अलग हो जाएंगे। अगर ये डाटा याद है तो क्वेश्चन आपको लेस देन 1 मिनट में बनेगा, 10-20 सेकेंड्स में बन जाएगा। अगर नहीं याद है तो कैलकुलेशन करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। इसी एरिया को मैं आपको पकड़ाऊंगा, इसी एरिया पे आपको मैं फोकस करूंगा कि कहां पे दूसरे स्टूडेंट से आप अलग हो जाएंगे। तो अभी ये डेल्टा n -1, राइट डाउन ऑन नोटबुक फास्ट। क्लियर? नो, अगर डेल्टा n का वैल्यू -2 हो जाए, लुक एट बोर्ड, अगर डेल्टा n
-1 हो जाए, टेम्परेचर यही आएगा, इतना ट्रस्ट करो कि यही आएगा, then 0.0821 into 273 to the power -2, it will be 002. When temperature 298, 0.0821 and 298 to the power -2, it will be 0.016. Clear? 0.016. When 0.0821 into 300 a power -2, it will be 0.016. And when temperature 373, 0.0821 into 373 to the power -2, it will be 0.010. Clear? Look at board. It is 0.00, not 0.0016, 0.0016 and 0.0010. क्लियर? अब इतना जानो कि इसके अलावा कोई डाटा नहीं है। आपका एक होमवर्क मैं देता हूं, ग्रुप में हम क्वेश्चंस भी भेज देंगे कि आप अगर केपी और केसी दिया है तो उस पे हम कैसे प्रैक्टिस करें। केपी केसी में जो है, केपी इज इक्वल टू केसी इज इक्वल टू R2 टू दी पावर डेल्टा एन, ये कैलकुलेशन में ही स्टूडेंट पीछे हटता है या उसको बहुत टाइम लगता है, एग्जाम में टाइम लिमिट है, और इसीलिए आप इस डाटा को याद रखो और इतना जान लो, प्रीवियस ईयर का जो पैटर्न है, जो क्वेश्चंस आया है, या हमारे सिलेबस में जो एग्जाम्पल्स है रिवर्सिबल रिएक्शन का, डेल्टा एन 1 आता है, डेल्टा एन 2 आता है, डेल्टा एन 3 भी आ सकता है पॉजिटिव, डेल्टा एन निगेटिव में -1, निगेटिव में -2 यही आता है, और टेम्परेचर फिक्स है 0, 25, 27 एंड 100 डिग्री। आप इस डाटा को याद रखेंगे, एक क्वेश्चन अगर यहां से आएगा, न्यूमेरिकल बेस आएगा तो आपसे बनेगा, अगर कैलकुलेशन नहीं याद रखोगे तो आपसे नहीं बनेगा। इसीलिए मेरा एक सजेशन है कि इस डाटा को नोट पे रखेंगे और इसको आप याद रखेंगे। अभी मैं प्रैक्टिस में फिर से इसको लूंगा और याद रखेंगे आप। क्लियर? नो, आंसर इज 0.61। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड टेक्स्ट मी अबाउट द कैलकुलेशन। क्या ये आपके काम में आएगा? क्या ये आपके समय को बचाएगा? अगर बचाएगा तो आप मुझे टेक्स्ट करें, देन आई विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट। मुझे टेक्स्ट करें कि क्या ये कैलकुलेशन आपके समय को सेव करेगा? फास्ट। टेक्स्ट में, क्या ये कैलकुलेशन आपके समय को सेव करेगा? फास्ट। आप ये कैलकुलेशन को याद रखें, ठीक है? अभी मैं इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स लूंगा, जिस क्वेश्चन को आप देख के कहोगे कि इसमें बहुत टाइम लगेगा, आपसे अब वो फिर उसी लिमिट समय के अंदर बनेगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन।
Look at the board. Kc for the reaction. Reaction is N2 plus O2 reversible 2NO. At 300 Kelvin, Kc is given 4 into 10 to the power minus 6. It is given at 300. For the above reason, R equal to this. Clear? Kc for the reaction 300 Kelvin is enough. For the above reaction, what will be R? Listen. What will be Kp? R is given. R is given. What Kp for the reaction? What will be Kp? R is given. R is given in calorie. R is given in calorie. And what will be Kp? Look at the board. Kc is given 4 into 10 to the power minus 6. We know that relation Kp is equal to Kc into RT to the power delta n. What will be delta n? Summation of coefficient of product minus reactant. Coefficient of product 2 minus summation of reactants 1 plus 1. It will be 0. Yes or no? Delta n 0. And when delta n 0, RT to the power 0, 1, Kp is equal to Kc. Kp is equal to Kc. And hence, value is 4 into 10 to the power minus 6, not RT square. Answer number 2. Question number 6. Clear? Because delta is 0 and Kp is equal to Kc. Text me. Is it clear? Text me. Question number 6 clear? Fast. Text me. Question number 6 clear? If yes, then write. Question number 6 clear? Fast. Write down. Question number 6 clear? Fast. If yes, then write me. Question number 6. Chito chito. Okay. Now, question number 7. Question number 7. N2 plus 3S2, 2NS3 plus heat. The above reaction Kp and Kc related with. Listen, we know that Kp is equal to Kc into RT to the power delta n. Clear? Delta n is equal to 2 minus 3 plus 1. 3 plus 1. It will be minus 2. Minus 2. Yes or no? Clear? Now, what will be relation? Formula is Kp is equal to Kc into RT to the power minus 2 and option number 2 minus 2 and hence option number 2 is correct. Question number 7. Yes? Now, clear? Always keep in mind relation for your coming examination. It is most important formula. Kp is equal to Kc into RT to the power delta n. Clear? Next. Question number 8. Kp minus Kt RT only in this case.
Listen, we know that Kp is equal to Kc into RT to the power delta N. That means Kp minus Kc is equal to RT to the power delta. Listen, mistake in question, Kp minus Kc is equal to, not Kp minus Kc RT. Kp minus Kc is equal to RT only in case of, listen, Kp minus Kt and is equal to RT. That means RT means delta N is equal to 1, not 0. When delta N will be 0, RT will be 1. Then Kp minus Kc. In which equation? Delta N will be 1. First number, delta N, 1 plus 1 minus 2. That means 0, not correct. 2 minus 3 plus 1 minus 2, not correct. 2, 1 plus 1, delta N 0, not correct. But in number 4, 1 plus 1, 2 minus 1. For number 4 option, 1 plus 1 minus 1, it is equal to 1, and hence Kp minus Kc equal to RT to the power 1. RT to the power 1. So in equation number 4, sorry, in option number 4, delta N equal to 1, and for delta N, Kp minus Kc is equal to RT to the power 1, and the relation only correct for equation option number 4. Clear? Clear? Question number 8. Next, question number 9. Question number 9. Which of the following relationship true for following reaction? Listen, again, reaction is PCl5 reversible PCl3 plus Cl2. Delta N is equal to 1 plus 1 minus 1 is equal to positive. So for the reaction, listen, Kp is equal to Kc into RT to the power 1. RT to the power 1. Option first. Kp is equal to Kc into RT to the power 1. Correct? Kp equal to Kc by RT. Not correct. Kp equal to Kc. Not correct. Kp equal to Kc by RT to the power 2. Not correct. And hence option number first is correct. Yes or no? And always keep in mind PCl5 in gaseous, PCl3 in gaseous, and Cl2 found in gaseous. All PCl5, phosphorus pentachloride, phosphorus trichloride, and chlorine are in gaseous form. Clear? Clear? Question number 10. Question number 10. Listen, Kp by Kc for the reaction. Again, CO gaseous plus half O2 gaseous convert into CO2 gaseous. Look at both. Kp by Kc. First, I will calculate delta N. Delta N is equal to 1 minus 1 plus 1 by 2. It will be minus half. Minus half. And we know that relation is equal to Kp is equal to Kc and RT to the power delta N. And RT to the power delta N means RT to the power minus half. And question is Kp by Kc. Kp by Kc. So Kp by Kc is equal to Kp by Kc is equal to RT to the power minus half. RT to the power minus half, and it is equal to 1 by RT to the power half
And 1 by RT to the power half means 1 by root under RT. 1 by root under RT. Clear? Then now tell me which will be correct? RT not correct, 1 not correct, RT to the power half not correct because RT to the power minus half, and answer will be 1 by RT to the power half, that means 1 by root under RT. Tell me yes or no? Fast. Fast. Tell me question number 10 clear? If yes, then text me question number 10 clear. Text me question number about question number 10. About question number 10. Fast. Question number 10 clear? Answer will be 1 by root under RT. Yes. About question number 10. Fast. Text me about question number 10. Now, question number 11. For the reaction this, Kp is equal to, listen, delta N of the reaction. Delta N is of the reaction. Reaction is N2 plus 3H2, 2 in delta 2NH3. 2 minus 1 plus 3. It will be minus 2. And hence, Kp is equal to Kc into RT to the power delta N, and delta N is minus 2. And hence, answer will be Kp is equal to Kc RT to the power minus 2. Yes or no? Question number 11. Clear? Now, question number 12. Clear? Question number 12. Fast. For the reaction, listen, reaction is 2A gas, reversible 3 gas plus D solid. Look at both. D is in solid form, and always keep in mind during calculation of delta N, coefficient of solid and pure liquid ignore, and hence delta N of the reaction is coefficient of solid ignore 3 minus 2, it will be 1. And what will be answer? The value of Kc will be equal to, relation is Kp equal to Kc into RT to the power delta N1. Yes or no? Now, Kc is equal to Kp by RT to the power 1. It will be Kp by RT. Kp by RT. Kp by RT. And equation number 2. Kp by RT, and hence 2 number correct. Clear? Clear? Next. Why 2 number correct? Because D is in solid form, and during calculation of delta N, coefficient of solid ignore. Now, question number 13. Look at both. For the reaction CO gas, Cl2 gas, Kp by Kc. At first, I will calculate delta N. Delta N is equal to 1 minus 1 plus 1. It will be minus 1. Relation is Kp equal to Kc RT to the power minus 1. And topic is Kp by Kc. So Kp by Kc is equal to RT to the power minus 1. That means only 1 by RT. 1 by RT. Yes or no? And 1 by RT in option number first. 13 number. Again,
text me you all 13 questions are clear? Clear? All 13s, 1 to 13. If yes, text me fast. All 13 are clear? Text me fast. All 13 clear? Fast. Okay. Now question number 14. Question number 14. For the reaction 2HiH2 plus I2, listen, 2HiH2 plus I2, delta N is equal to 1 plus 1 minus 2, it will be 0. And when delta N is equal to 0, Kp is equal to Kc. First, Kc to Kp, no. Kc greater than Kp, no. Kc less than Kp, no. Kc is equal to Kp, and hence equation number 3rd is correct because delta N is equal to 0. Clear? Now, question number 3rd. Sorry, question number 14, option number 3rd is correct. Now, 15. Equilibrium constant of chemical equilibrium is 3.2 if the velocity constant of forward reaction is 1.12 10 to the power minus 3 velocity constant of backward. Listen carefully. Equilibrium constant, look at board, that means Kc or Kp is equal to Kf. Always keep in mind Kf by Kb. वेरी सिंपल. और ये जो क्वेश्चन है ये आपके कंबाइंड एग्जाम के स्टैंडर्ड में है, आपके एग्जाम के लिए मैंने सेट किया है. आपको क्या किया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया. तो पहले तो ये जानो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन के रेशियो का कांस्टेंट होता है. ये दोनों भी कांस्टेंट है, बट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड, कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड, एंड रेशियो ऑफ rate constant of forward and rate constant of backward is called equilibrium constant. So in your question, equilibrium constant given 3.2 is equal to velocity constant of forward reaction is given 1.12 into 10 to the power minus 3 dividing by backward and Kb, and it is given what will be value of Kb. तो Kb is equal to, listen, Kb is equal to 1.12 10 to the power minus 3 and dividing by 3.2. Clear? Clear? Now, what will be answer? What will be answer? Calculate you all. What will be Kb? 1.12 10 to the power minus 3 dividing by 3.2. What will be answer? First, Bhayo, what will be answer? You all do. Text me what will be answer. Text me what will be answer. Question number 15. No.
Manus, लिसन, मैं करता हूं, आप देखो कैसे सोचेंगे। एक्यूरेट नहीं करना है तो आप ऐसे करो, लिसन, 10 to the power minus 3, नोमिनेटर लेसर देन डिनोमिनेटर, एंड हेंस ये पॉइंट में होगा, या आप अगर मान लो, देखो तो अगर ये जब भी होगा, ये छोड़ दीजिए -3, ये पॉइंट में होगा, 0 पॉइंट, क्योंकि ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, सॉरी ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है। कैसे आप इसमें बिना गुना के आंसर दोगे? तो पॉइंट में होगा तो यहां पॉइंट बढ़ेगा, मतलब पावर माइनस में बढ़ेगा। अगर आप इस डेसिमल को हटाओगे तो यहां -5, ये हटाओगे तो -4, तो मैं लिखता हूं 112/32 इंटू 10 to the power -4। तो देखो जब -4 आ गया, अब ये समथिंग होगा, तो ये समथिंग है तो ये नहीं होगा -3, ये नहीं होगा -3। अब आपके पास दो ऑप्शन है, लिसन, अब ये देखो ये 30 और 33 जा 90, 34 जा 120, तो 4 से थोड़ा कम होगा, ये 2.86 है, ये नहीं होगा, और 3 से ज्यादा होगा, इट विल बी ऑप्शन नंबर 3rd। यस और नो? आफ्टर कैलकुलेशन you can check it, it will be 3.5 into 10 to the power -4. Yes or no? First, up question number 15, option 3, yes. Now question number 16, the equilibrium constant for the following will be, listen, equation is 2a plus, equation is 3a plus 2b convert into c, it is in reversible form. What will be equilibrium constant? Listen, Kc is equal to conc of c by conc of a to the power 3 and b to the power 2. Clear? Because coefficient raised to power of conc, coefficient raised to power of conc, and Kc is equal to conc of c by conc of a to the power 3 and b to the power 2, and hence option number 4 is correct. Option number 4 correct. Clear? Next, question number 17. If the concentration of reactant are doubled, listen, conc of reactant double, chemical equation having two reactants in equilibrium, then equilibrium constant. Listen, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे दो ऑप्शन में डबल लगा हुआ है, तो दो ऑप्शन नहीं होगा डबल, ये इट इज प्रिंटिंग मिस्टेक। और आप हमेशा जानो, इफ conc of reactant are double in a reversible chemical equation having two reactants, then the equilibrium constant, clear? Equilibrium constant, listen, equilibrium constant only depend upon temperature, only depend upon temperature. Always keep in mind, Kc, Kp do not affected by concentration change, pressure change, addition of inert gas, and addition of catalyst. I am repeating, Kc, Kp, Kc and Kp are depend upon only temperature, only temperature. Kc, Kp depend upon only temperature. Always keep in mind.
Due to concentration change, Kc, Kp not affected. Pressure change not affected. Due to catalyst, Kc, Kp not affected. Due to addition of another gas, inert gas, Kc, Kp not affected. Kc, Kp of a reaction is only depend upon temperature. That means for a reaction, Kc and Kp always constant at a temperature. When temperature will be changed, Kc, Kp of the reaction change. And hence, answer of the question do not change. Yeah, remains same. Answer is remains same. Clear? Next. Question number 18. Question number 18. Listen. Question number 18. For the reaction A plus B, C plus D, the concentration, if the concentration of A and B is doubled, then equilibrium constant again remain same, half, double and increase 4 times. Always keep in mind, I am again repeating, equilibrium constant do not depend upon concentration change, pressure change, catalyst and addition of inert gas. Again repeating, equilibrium constant depend upon only temperature, and hence due to concentration change, equilibrium constant first number remains same. Equilibrium constant remain same. Doubled, half, increase 4 times, wrong. And if the conc of A and B double, equilibrium constant remains same. Clear? Clear? Next question. (19) For the reaction, this 2 moles of A and 3 moles of B are allowed to react. The equilibrium constant is 4 at 4 degree. Then mole of C at equilibrium. Listen, this is a application of Kc and Kp, calculation of Kc and Kp. Look at both. A reaction is given A plus B convert into C. Look at both. 2 moles of A and 3 moles of B are allowed to react. Listen, at time is equal to 0, moles is equal to 2 and moles is equal to 3. Clear? Are allowed to A plus B convert into 2C. React. At time equal to 0, C will be 0. Clear? At equilibrium, look at both. 2 minus X, because when reaction start, conc of reactant decreases. 3 minus X and coefficient 1 and coefficient of C is 2, and hence it is 2X. It is 2X. And listen, 2 minus X are mole at equilibrium. If in a question, listen carefully, delta N 0, no need of volume for calculation of Kc. It is mole, and when conc at equilibrium, 2 minus X dividing by V, 3 minus X डिवाइडिंग बाय V and 2x by V. आप अगर ये V नहीं भी लगाओगे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे
जब डेल्टा एन जीरो है, अगर डेल्टा एन जीरो नहीं होगा तो वॉल्यूम अब आ सकता होगा, इसलिए मैंने बेस में आपको ये ले लिया कि वॉल्यूम. नाउ व्हाट विल बी फार्मूला ऑफ केसी? केसी इक्वल टू conc of C squared into conc of A into conc of B. Clear? Look at board. Kc is already given for conc of C squared 2x by V whole square dividing by 2 minus x into 3 minus x by V and by V. V square cancel. 4 is equal to, listen, 4x squared by 2 minus x and 3 minus x. Clear? Clear? 4x square is equal to 2 minus x and 3 minus x. Write down. Clear? Now, next, 4 into 2 minus x into 3 minus x is equal to 4x squared. 4 2 ja 8 minus 4x into 4 3 ja 12 minus 4x is equal to 4x squared. Clear? Clear? Now, listen. 4 8 ja 96 minus 32x again minus 4 12 48x minus 16x squared is equal to 4x squared. Yes or no? 96 minus 80x minus 16x squared is equal to 4x squared. Clear? Now, (20x squared minus 80x is equal to 20x squared plus 80x is equal to 96. Yes or no? Next, after calculation, 20x squared plus 80x is equal to 96. Now calculate to value of x. What will be value of x? 20x squared plus 80x is equal to 96. Calculate value of x first. And when x, value of x will be calculated, then conc of C at equilibria is 2x. Answer will be 2x. Clear? Do fast.
Again, listen. Question is for the reaction A plus B 2C. A plus B reversible 2C. 2 moles of A and 3 moles of B given. 2 moles, 3 moles. C0, 2 minus X, 3 minus X, and it is 2X. Kc is equal to conc of C squared dividing by conc of A into conc of B. Kc is already given. Kc is given and Kc is given 4 is equal to conc of C squared. The C square means conc of C 3 minus X squared. Sorry. Conc of C squared, that means 2X squared by conc of A 2 minus X and conc of B 3 minus X. And it is equal to 4 is equal to 4X squared by 3 to the 6 minus 2X minus 3X and plus X squared, and it will be 4 is equal to X squared by 6 minus 5X plus X squared. Clear? Clear? Now, 4X squared is equal to 24 minus 20X plus 4X squared. Clear? 4X squared. 4X square, 4X square cancel, and hence 20X is equal to 24. X is equal to 24 by 20. That means it will be 12 by 10, 6 by 5. X is equal to 6 by 5 is equal to 0.160 1.2. Clear? And X is equal to 1.2, but conc of C at equilibrium double at, and hence answer will be 2.4. Clear? Clear? Answer will be 2.4. Fast. X is equal to 1.2, yes, but answer will be 2.4 because at equilibrium conc of C is 2X. Conc of C is 2X. Fast. Next question. Question number 20. Write on fast. Question number 20. 2 moles of PCl3 is heated in 1 liter vessel at equilibrium 0.4 mole of Cl2 form. The value of equilibrium constant will be. Listen, 2 moles of PCl3 heated, not PCl3, it will be PCl5. Listen, PCl5. 2 moles of PCl5 heated in 1 liter vessel at equilibrium. Listen, PCl5 convert into PCl3 plus Cl2. Clear? Time is equal to 0. It is given 2 moles. 0 time. Both are 0, 0.
at equilibrium, listen, 0.4 mole of Cl2, 2 minus x, it will be x, and value of x is given 0.4, 0.4, and hence coefficient of both are x, and hence it is also 0.4, and 2 minus x, that means 2 minus x is 0.4, to 0.4 it will be 1.6. That means at equilibrium 1.6, 0.4, 0.4, and volume is given 1 liter. Volume is given 1 liter. Then what will be value of Kc? Volume 1, that means conc by 1. Conc equal to 1.6 by V, 0.4 by V, and 0.4 by V is 1. V is 1. What will be Kc? Listen. Conc of this into this by this. The conc of this 0.4 into 0.4. After calculation, listen. After calculation, it will be, look at both, 0.4 into 0.4 by 1.6. 0.4 into 0.4, 1.6. 1 point cancel, 16 cancel. That means it will be 0.1 and called 1 into 10 to the power minus 1. What will be answer? 1 into 10 to the power minus 1. Number 4. Clear? Next. Question number 21. The unit of Kp for following reaction. Listen. For all questions, listen, unit of Kp, unit of Kp, always Atm to the power delta n. Write down in notebook. Atm to the power delta n is unit of Kp. And what will be unit of Kc? Unit of Kc is equal to mole per liter to the power delta n for each reaction, and delta n is summation of coefficient of gaseous product minus summation of coefficient of gaseous reactant. Then what will be delta n? Look at both. Delta n for the reaction 2 minus 1 plus 2. It will be minus 1. And question is unit of Kp, not Kc. So Kp is Atm to the power this. The unit of Kp of the reaction, unit of Kp of the reaction, Atm to the power minus 1. Atm not correct, mole per liter not correct, Atm to the power minus 1 is correct. Answer number C. Yes or no? Answer number C. Clear? Next question. Question number 22. Kc for the reaction. Listen, one reaction is H2 plus I2 reversible 2HI. Kc is equal to 64. Kc is 64. If the volume of the container reduced to 1/2 of its original volume, the value of equilibrium constant. Again, Kc is 64. Volume decrease. Concentration reactant product will be changed, but equilibrium constant never be changed. Equilibrium constant always constant. Equilibrium constant always constant at a temperature, and hence remain same. Equilibrium constant 64, due to volume change equilibrium constant not change, and hence answer will be 64. Yes or no? Next. Answer 64, because due to volume change equilibrium constant do not
change. Now, equilibrium concentration of H2, I2 and HI are this respectively. The value of equilibrium constant for the reaction. Listen, reaction is H2 plus I2 reversible 2HI. Kc is equal to conc of HI squared by conc of H2 into conc of I2. And in your question, equilibrium constant or equilibrium concentration already given. HI given 0.7 squared by H2 0.1 m and I2 0.1 m. Clear? 0.1, 0.1. It will be 0.49 dividing by 0.01, point cancel, and after calculation it will be 49. It will be 49. Clear? Look at board. Clear? Question number 24. Listen, equilibrium concentration already given, and hence conc of HI square equilibrium. It is equilibrium, not initial conc. Equilibrium conc given, and hence after calculation 49. Next. (24) For a reversible reaction, N2 plus 3H2 Kc is given at equilibrium N2 and this the equilibrium conc of this. Listen, reaction is N2 plus 3H2 convert into 2NH3. Equilibrium constant is given. Equilibrium conc is also given. If at equilibrium conc, what will be conc of NH3? Listen, Kc is equal to conc of NH3 squared by conc of N2 and conc of H2. Conc of H2 N2 given, Kc is given 2.37 into 10 to the power minus 3. Conc of NH3, it is given to calculate conc of NH3, and conc of NH3 square is equal to N2. N2 is 2, and listen, equation is 3H2 power 3, and hence 3 to the power 3. Clear? Now, 3 3 ja 9, 3 ja 27, and 27 2 ja 54. The conc of NH3 squared is equal to 54 into 2.37 into 10 to the power minus 3. Clear? Now, look at board. Look at board. Conc of NH3 square, and it is given what will be conc. What will be conc? Then when अगर ये स्क्वायर आप हटाओगे तो इधर रूट आएगा, और रूट के लिए क्या करते हैं, हम इसको पहले -4 कर लेते हैं. तो जब -4 करेंगे, then it will be conc of NH3 squared is equal to, listen, 5.4 into 2.37, clear, into 10 to the power minus 4. Yes or no? अब अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो क्या होगा कैलकुलेशन, ये देखिए. लिसन, 5.4 इंटू 2.37 अगर आप अप्रोक्सीमेट करेंगे, आप अप्रोक्सीमेट, ये 10 का पावर -2 हो जाएगा जब स्क्वायर करेंगे, और ये 5 2 जा 10, और ये हो जाएगा आपको अप्रोक्सीमेट 11, अप्रोक्सीमेट ये 12 होगा. और 12 का अगर 12 का आप स्क्वायर करते हो, लिसन, 12 स्क्वायर, सॉरी 12 का अप्रोक्सीमेट, 5 2 जाइए अप्रोक्स 12 होगा,
और अप्रॉक्स 12 को अगर आप रूट लेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग होगा। 3 पॉइंट, क्योंकि 9 का रूट 3 होगा और 12 3 पॉइंट समथिंग, तो 3 पॉइंट समथिंग है। और ये 10 का पावर -2, तो 2 अंक, तो 0.03 0.03 आप आंसर चेक कर लीजिए, ये आ जाएगा कॉन्क ऑफ NH3, कॉन्क ऑफ NH3 इज इक्वल टू 0.0358। क्लियर? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 24। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, and for 24 second answer is correct. Now question number 25. Look at board. For the following reaction 2A plus B convert in expression of equilibrium, very easy. Equation is 2A plus B convert into C, equilibrium constant Kc, conc of C, conc of A to the power 2, conc of A to the power 2 and conc of B, and it is correct expression of equilibrium constant, conc of C, conc of A to the power 2 into conc of B, and hence equation number second is correct. Sorry, option number second is correct. Listen, मैंने इस लेक्चर में आपको आज 25 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया। ये टोटल 25 क्वेश्चंस PDF फॉर्म में मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। ऐसे अगर आप इस 25 क्वेश्चन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टोटल 25 क्वेश्चन मिल जाएगा। आप ये 25 क्वेश्चन को एक बार और देख लेना, लेकिन ये दिमाग पे रखना है, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। कंबाइंड एग्जाम का यही स्टैंडर्ड है, यही टाइप है, उसी टाइप पे मैं काम कर रहा हूं। केमिकल इक्विलिब्रियम अभी खत्म नहीं हुआ कि केमिकल इक्विलिब्रियम का जो मेजर पार्ट, अभी एक और पार्ट है। एक हो गया Kc Kp का यूनिट याद रखेंगे, Kc Kp का रिलेशन याद रखेंगे, और Kc Kp का एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे रिलेट करता है, वो 3 तरह का क्वेश्चन पे काम किया। Kc Kp का कैलकुलेशन, एक्सप्रेशन हो गया। अगले सेक्शन में, कल के क्लास में, मैं आपको ली-चैटलियर प्रिंसिपल पे काम करूंगा, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पे काम करूंगा, होमोजीनियस, हेटेरोजेनियस, यानी कल हम जो क्वेश्चंस लेके आएंगे तो केमिकल इक्विलिब्रियम को एंड करेंगे। उसके बाद फिर कल जब क्वेश्चन ये चैप्टर एंड हो जाएगा तो आपको ये जो क्वेश्चंस अभी 25 कल का क्वेश्चन उसका PDF मिलेगा और एक टेस्ट पेपर मैं आपको भेजूंगा। तो क्लास लेक्चर प्लस टेस्ट पेपर के अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। इतना निश्चिंत रहिएगा कि जो दे रहा हूं उससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। अभी 2 दिन से थोड़ा, चूंकि मेरा ये नया है, लाइव का अभी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो जा रहा है, बट कोशिश करेंगे कि कल से कोई इशू नहीं हो, राइट टाइम पे क्लास शुरू करेंगे। मैं नोटिफिकेशन अभी मैं आपको थोड़ा देर के बाद भेजूंगा। आप लोग मुझे चाहे तो मैसेज कर सकते हैं कि आपके लिए कंफर्टेबल टाइम क्या हो, कौन सा टाइम आपके लिए कंफर्टेबल है। मॉर्निंग में 9:15 को और अर्ली कर सकते हैं, जितना अर्ली चाहो आप कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 7:15 कर सकते हैं, 7:35 कर सकते हैं, 7 आफ्टर 7 AM आप कोई भी टाइम आप लोग सेट कर लीजिए और मुझे मैसेज कर दीजिए। जो कंफर्टेबल टाइम होगा कल उस पे हम लोग लाइव क्लास लेंगे और मुझे टाइम का मैसेज आप इंस्टेंट करेंगे, ताकि हम आपको कल का लाइव स्ट्रीमिंग का हम आपको नोटिफिकेशन आपके ग्रुप पे और यूट्यूब पे आप ऑलरेडी वो रहेगा। थैंक यू सो मच, और हम आगे और बेस्ट करने का कोशिश करेंगे। इतना आपको मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि ये 25 डेज जो अप्रॉक्सीमेट मान लो बचा है आपके एग्जाम का, उस 25 या 1 मंथ्स में हम आपको 4500 क्वेश्चंस कर देंगे डिस्कशन और आपके टेस्ट पेपर को मिला करके। उसी 4500 क्वेश्चन से आपका टोटल क्वेश्चंस आएगा
ये मेरा प्रॉमिस है। इसीलिए अपने इस वीडियो को आप अपने स्टूडेंट्स में आप सर्कुलेट कर दीजिए ताकि उनको बेनिफिट्स हो और हम लोग आगे के काम करेंगे। थैंक यू।